Hello YouTube, hi, my first video. So sorry, no fancy background music, no fancy logo, no fancy introduction. Sorry, अगर अच्छा response आता है तो eventually मैं ज़्यादा time spend करूँगा इसके ऊपर और बनाऊँगा logo, बनाऊँगा background music and probably get someone to hold the camera for me like that so that you can see what I look like. Yeah, my face look like shit, I know, because I need some cutting and trimming my beard anyways. What's more important is what I'm talking about. Yeah, so in my channel, in my introduction, I'm going to tell you that I'm going to be talking about a lot of different topics. It's basically going to be about grooming. So if you don't like this particular topic that I'm talking about right now, but still stick around, eventually I'll be talking about other things as well. So let's talk about something trending. Fat loss. Fat loss is very trending. Everyone wants to get slim. Steroids, magic pill. You take the magic pill and you become slim. I know my shit, so trust me what I'm gonna tell you now. So there are two most important drugs. Okay, first of all, I have used steroids in the past. This time my transformation is totally clean. However, पिछली बार मैंने जब किया था तो that's approximately काफ़ी साल पहले किया था मैंने. I think it's been 2 to 3 years पहले. So I've used almost anything and everything, starting from testosterone to boldenone, trembolone, decadurabolin, dynabol, anadrol. I've used it all. सब कुछ use किया है मैंने. Yeah. So I'm not telling you to use it. Do not go down that road. There is a reason कि इस बार मैंने naturally किया है because I now understand the consequences of it. Anyways, but still there are young people who are ready to do stupid things, and trust me guys, मैं मिलता हूँ ऐसे लोगों से who are hampering their health and don't know what they are doing और बस results चाहिए इसके लिए कर रहे हैं. So I'm not telling you to go down that road. However, if you do decide to go down that road, my knowledge is what I'm sharing with you, my experience is what I'm sharing with you. So fat loss की दो important drugs है. One is T3. It's a thyroid hormone, so do not fuck around with it unless you're a professional bodybuilder. तुमको thyroid hormone यानी T3 की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत सस्ता मिलता है ये और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं. तुमको इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. And try to stay as natural as possible. However, तुमने decide कर ही लिया है तो T3, still stay away from it. The other one is clenbutrenol. Clenbutrenol is the most important drug when it comes to fat loss. It is very commonly used. Trust me, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा common है ये. So clenbutrenol is basically a drug. It's oral. गोलियाँ आती है छोटी. एक गोली होती है 40 mcg का डोज होता है एक गोली का. 50 टैबलेट्स आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपये में अंडरग्राउंड लैब्स के थ्रू. आई थिंक दैट्स व्हाट, आई डोंट नो. एनीवेज, सो एक टैबलेट तुम खाते हो 40 mcg की. इसका डोसेज जैसे होता है कि फर्स्ट डे इट्स 40 mcg, सेकेंड डे तुम 2 टैबलेट खाते हो 80 mcg, थर्ड डे तुम 3 टैबलेट खाते हो 120 mcg, एंड देन 120 mcg यानी माइक्रोग्राम्स. You continue using it for 2 weeks and then 2 weeks के बाद तुम बंद कर देते हो इसको यूज़ करना, and then 2 weeks फिर से चालू करते हो, 2 weeks फिर से बंद करते हो unless you've reached your goal. So side effects, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है किलोमीटर दूर रहना, सोचना भी मत इसके बारे में. Like if you have issues with your heart, your blood pressure and shit, no, this is not for you. Trust me, जिंदगी ज़्यादा important है. So clenbutrenol, if you have heart problems, please stay away from it. Other side effects include night sweats, cramps. नाइट स्वेट्स यानी सोते टाइम बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, नींद नहीं आ पाएगी. cramps also you'll get because of the fat loss. So basically ये ड्रग करता क्या है clenbutrenol? It increases your body temperature. तुम्हारी बॉडी हीट अप हो जाती है. It increases your metabolism, जिसकी वजह से तुम्हारा फैट लॉस होता है. तो if your body is heated up and if you're doing cardio, imagine your body is already heated up, तो दिन भर तुम्हारा कार्डियो ऑटोमेटिक हो रहा है, गर्म होने की वजह से ऑटोमेटिक तुम्हारा फैट लॉस हो रहा है बॉडी गर्म होने की वजह से. प्लस इफ यू आर वर्किंग आउट एंड इफ यू आर डूइंग कार्डियो तो और जल्दी फैट लॉस एड हो रहा है. प्लस यू आर लूजिंग द कैलोरीज एज वेल व्हेन यू आर डूइंग कार्डियो.
प्लस द डाइट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प. डाइट इज की. अगर तुम डाइट सही से करो ना तुमको कोई ड्रग की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है. ट्रस्ट मी, किसी चीज की जरूरत नहीं है. देयर आर सो मेनी डिफरेंट डाइट्स टू डू द फैट लॉस. Okay, so that's about clenbutrenol there. Very dangerous. Don't fuck around with it. No need यार diet पे कर लो. However, if you do decide 40, 80 plus 40, 120, professional bodybuilders 160, 200 तक जाते हैं. MC micrograms के डोज तक जाते हैं. मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है. Yeah, so stick to 120, 2 weeks on, 2 weeks off. There is another way of cycling it. 2 days on, 2 days off. भी लोग करते हैं. 2 दिन तक लेते हैं फिर 2 दिन बंद करते हैं. आई वुडंट रियली रिकमेंड दैट. सो एनीवेज तो रिकमेंड तो कर ही नहीं रहा हूँ, बट अगर करना ही है तो ऐसे तो बिल्कुल मत करना. 2 हफ्ते ऑन 2 हफ्ते ऑफ इज अ गुड आइडिया. एंड 120 माइक्रोग्राम से ऊपर मत जाना. ओके, सो that's about clenbutrenol. And then when it comes to cardio and exercise, वेट उठाने से तुम्हारा वजन कम नहीं होने वाला, तुम्हारा मसल बिल्ड होने वाला है. सो यू हैव टू डू कार्डियो. हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लूजिंग फैट. द बेस्ट एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी कार्डियो वुड बी रनिंग, स्प्रिंटिंग एट हाई स्पीड. फुल स्पीड भागो, थक जाओगे, रुको, फील योर ब्रेथ, अगेन फिर फुल स्पीड से भागो. ऐसे करो आधे घंटे तक या जब तक थक ना जाओ पूरी तरह से. And then this is the fastest way to lose fat. The second fastest way would be skipping, full speed skipping. रुको, full speed skipping करो. And then the third would be spin-in sessions जो जिम वगैरह में होते हैं. सब जिम्स में नहीं होते, कुछ ही जिम में होते हैं, the expensive ones. So anyways, you don't need it. Running करो, क्या ज़रूरत है, ग्राउंड पे जाके करो. Okay, so this is about the exercise. And then the most important part when it comes to fat loss is the diet. There are so many different ways to lose fat. Cutting down on carbs is really important. किसी भी तरह के डाइट में, almost in every diet you'll have to cut down on carbs. Carbs यानी कि carbohydrate. Carbohydrate is a source of energy and the most cheapest and most commonly available source of energy. चावल carbs है, बंद कर दो. रोटी carbs है, बंद कर दो. Potatoes and everything, these things are carbs. So बंद कर दो, पूरी तरह से बंद कर दो. And there are 2 kinds of carbs. One is simple carbs, one is complex carbs. Simple carbs is basically insulin spike, यानी कि शुगर, ब्लड शुगर लेवल में इमीडिएटली स्पाइक हो जाता है, एक साथ में हो जाता है. यानी कि जो वाइट राइस और ब्राउन राइस का डिफरेंस है बेसिकली. वाइट राइस खाते ही 40 मिनट लगता है कोई भी चीज़ खाने के बाद. 40 मिनट्स टू 1 आवर तुम्हारी बॉडी को उसको प्रोसेस करने में, टू गेट द एनर्जी आउट ऑफ इट. एंड देन इमीडिएटली यू विल हैव बिग एनर्जी स्पाइक, फुल ऑन एनर्जी. सो जिम जाने से पहले अगर तुम व्हाइट राइस खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू विल बी हैविंग दैट एनर्जी टू वर्क आउट. एंड देन एनीवेज, एंड द अदर इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ब्लड शुगर लेवल्स को थोड़ा थोड़ा करके स्पाइक करते हैं, एक साथ में नहीं. मतलब 1 घंटे से या 2 घंटे से थोड़ा थोड़ा ब्लड शुगर लेवल राइज होगा, जिसकी वजह से फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि जितना एनर्जी तुमको मिल रहा है उतना एनर्जी तुम यूटिलाइज कर रहे हो. अगर तुमको एक साथ में एनर्जी मिल रहा है और तुम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी इसको फैट्स में कन्वर्ट करके स्टोर करेगी. सो या, सो द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी टू लूज फैट इज कीटो. कीटो डाइट इज द मोस्ट ईजिएस्ट हाई फैट डाइट. गुड फैट्स इसके अंदर तुम लो, जैसे कि, एंड इंडियंस इज वेरी इजी टू डू कीटो फॉर इंडियंस. क्या करना है, सिर्फ चिकन या अंडे बना के खाना है, घी में बटर लगा के, चीज़ लगा के, सिंपल. बट डोंट ओवरडू इट, बिकॉज रिमेंबर यू स्टिल हैव टू स्टे ऑन अ कैलोरिक डेफिसिट. एंड बटर और घी काफ़ी हाई कैलोरी चीज़ें हैं. सो डोंट ओवरडू पूरा घी में या पूरा बटर, ऐसा ज़्यादा भी मत डाल देना. एंड that's how keto works. This is basic stuff about keto. Of course I'm not going to give you a full diet. Full diet चाहिए तो मैसेज करो. Yeah, other thing is cutting down carbs. Carbs cut down करो. White rice बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, potatoes वगैरह बंद कर दो, कम कर दो. And that's about it. You stick to chicken, you stick to green vegetables, you stick to eggs, just normal stuff, not keto, normal diet. And then there is fasting, जो रमज़ान में जैसे करते हैं, pretty much the same except for the water part. You can have water, लेकिन जितना कम पानी पियोगे उतना और ज़्यादा हेल्प करेगा. So even if you don't have the water, it's best for you. And then that's about intermittent fasting.
and cutting down carbs. That's the normal diet. And keto is of course getting very famous because keto में क्या होता है, तुम्हारी body ketosis नाम के एक मोड पे चले जाती है when you stop feeding your body with carbs, because carbs is your primary source of energy for your body. And then if you stop feeding your body with carbs, you're giving good amount of fats to your body, तो तुम्हारी बॉडी क्या करती है, फॉर एनर्जी सोर्स इट स्विचेस ओवर टू फैट्स. तो तुम्हारी बॉडी जो भी फंक्शन कर रही है दिन भर में, उसके लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कार्ब्स इट विल स्टार्ट यूजिंग फैट, विच मीन्स तुम्हारा जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है वो भी यूटिलाइज होगा, विच इज गोइंग टू हेल्प massively in fat loss, especially if you are extra obese or extra fat. It's gonna help you a lot matlab a lot. If you are like super obese and you want to get thin real fast, keto is the way to go. And then 3 months tak karo keto, 3 months off, 3 months on, 3 months off. Or maybe if you're really obese, then 3 mahine on and then 1 mahina off, and then 3 महीना ऑन, ऐसे करके स्विच करो, साइकिल करो कीटो, and that's the best way to get thin. So we talked about clenbutrenol, we talked about the drugs, we talked about the exercise, we've talked about the diet. That's pretty much everything when it comes to fat loss. Yeah, so first video, let me know how it was. I know it was pretty basic stuff, and yeah, I need to work on my editing and good video quality and shit like that. I will eventually get to it if I get good response and shit. I do know my shit. I'm not a professional bodybuilder, but I've done my research, I've read a lot, I've experienced a lot. So yeah, that's about it. Comments छोड़ो, बताओ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही लगा, क्या गलत लगा. If you have any questions as well, leave it down in the comments, and I'll see you around maybe in the next video. I am thinking we'll make steroid profiles and like about different drugs, like one video about testosterone, and then one video about trembolone, one video about decadurable, and I know in detail about that shit, trust me. And then eventually we'll talk about grooming as well. We can talk about gaming as well. We can talk about hobbies and passions and other things that I've been doing. Rapping, super biking as well. I've been into it. I can tell you about it. काफ़ी चीज़ें हैं मैं बस शेयर करने को. So let me know. Yeah. Bye bye.